We are going to talk about Bianchi identities of a connection on manifold. So, there are two basic invariants on a manifold. One is the torsion and the other is the curvature. We defined these tensors in our last lectures. So, now Bianchi identity tells that their derivatives of torsion and curvature, they are related among themselves. So, I am going to talk about those relationships. One is called the first Bianchi identity and the second one is called the second Bianchi identity. So, there are two identities. In order to establish these identities, we need certain formulas of covariant differentiation. So, one of the formula, in fact, if you want to differentiate, for example, the torsion T with respect to a vector field T. So, after using the properties, what we found that del xt of yz, when you differentiate a 1-2 tensor with respect to a vector field, the resulting thing is also a 1-2 tensor. So, this is another 1-2 tensor given in the bracket. When it operates on a pair of vector field, it gives you del x t yz minus t of del x yz minus t of y del xz. The proof of these formulas can be seen in a book by Helgesen, where he has computed covariant derivative of various important tensors. So, proof one can see it over there, but we will be using this. And another one is the covariant derivative of curvature. So, we denote by R the curvature. So, its covariant derivative with respect to a vector field x. So, it is also given by, now this time the first term is del x r yz minus r of del x yz minus r of y del xz. This is the Lie bracket. We talk of Lie bracket of two vector fields, but r yz at a point is a linear map. Not only we can think of Lie bracket of two vector field, but some other operators also. So, this is a more general thing. Alright, we will make use of these two formula while proving Bianchi identities. The other thing that I will be using in the proof is the notion of cyclic sum. Cyclic sum is denoted by the symbol S. So, if you are considering the cyclic sum of say R x y z, so I can permute cyclically these three vector field x, y, z, and I can take the sum, and that will be equal to R x y z plus R y z x plus R z x y. So, if you want to write down this sum, we use this symbol, the cyclic sum of R x y z. You can have some other tensors also, but the cyclic sum stands for this. So, these are some of the things that I will be using in order to prove these identities. So, let me write down the identity. So, the first Bianchi identity. The first identity is given by the cyclic sum of R x y z is equal to the cyclic sum of T of T x y with z plus the derivative. We were using the symbol d rather than del, because both of these symbols are commonly used. Sometime for a Riemannian connection people use del, and for general connection people use d. So, I should use d rather than del. Okay. So, you can make it del, no problem. So, plus
d of dx of t, cyclic sum of dxt yz. This is the, all right, this is the first Bianchi identity. So the proof, let us see how proof goes. So look, it's beautiful looking formula. In the left hand side you have the cyclic sum of curvature, whereas the right hand side involves only the torsion. Apparently these two invariants do not look connected. What Bianchi discovered, they are connected, and they are connected in this manner. Alright, so in order to prove it, I will consider this term. So start with, so t of t x y z, t of t x y z. X y z denote the vector fields on the manifold. So I can write down this t of, this will be dxy minus dyx minus leave bracket xy with z. By the formula of the torsion, this txy equal to this much. Now I can, t is additive, being a tensor it is additive, so I can rewrite as t of dxyz and then minus t of dyx, but t is skew symmetric, so I can write down this as plus t of z dyx. ये मुझे लिखना चाहिए था माइनस टी डी वाई एक्स जेड, लेकिन इन दोनों टर्म को मैंने इंटरचेंज कर दिया, सो दिस माइनस कन्वर्ट्स टू प्लस, सो देन माइनस टी ऑफ लीव ब्रैकेट एक्स वाई जेड. Okay, so this is t of t x y z. So now this what I will do is I can operate this t on it. So all right, so no, I will not operate. So I will take the cyclic sum. So this implies that the cyclic sum of t of t x y z, तो इसका cyclic sum अगर लिखना होगा, so I have to write down these three terms three times by permuting x, y, z. So the first term will be t of dxyz plus t of z dyx minus t of leave bracket xyz. Then you will add in it t of, अब x की जगह y कर दीजिए, y की जगह z और z की जगह x, plus same thing over here, tx z minus t y x. Then one more term, t of z x y plus t z. Be careful, I should not make a mistake over here, minus t of okay, perhaps it's correct. So now I will combine certain terms. So what I will do, I will write down this term and this term together. ये हम किस तरह से कंबाइन कर रहे हैं, हमारे जहन में है कि dx कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ यहाँ आ रहा है, ठीक है. So I am combining these two terms. So t of dxyz plus t of y dxz. Okay, and फिर हम कंबाइन करेंगे dy, this term and this term together. I will write them down. So t of dyz x plus t of z dyx. Okay, then this term and this term can be combined, and we can write down t of dzx
y plus t of x dzy. Okay, and the remaining terms are these terms of Lie bracket. So okay, उसको मैं फिलहाल cyclic sum के तौर पे लिख लेता हूँ because of the lack of space. So this is t of Lie bracket x y z. ये तीनों term आ गए एक साथ like this. Okay. Okay, now look at the first two terms and look at this formula. Formula 1, number 1. It tells you, so using formula number 1 over there, so the first two terms can be written as del x dx tyz minus dx tyz. देखिए टोटल डेरिवेटिव है ये वाला, ये टोटल डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है ऑफ टी वाई जेड is a vector field. I am differentiating this vector field with respect to x, whereas here t is being differentiated with respect to x to give you a new tensor which is operating on yz. So on applying the first formula on the first two terms, similarly you apply over here. अब सिर्फ x को जगह y की जगह z और z की जगह x कर दीजिए, ये भी लिख जाएगा. सो ये हो जाएगा dy of tzx minus dy tzx. Okay, same thing over here. So plus bracket, okay, dz txy minus dz txy. Okay, minus cyclic sum of t of Lie bracket xy z. All right. Okay. Now this, अब भी फिर चूँकि जगह कम है इस वजह से we will use the notion. So what I will do, I will write these terms. तो पहला टर्म इसको लिखूँगा, इसको लिखूँगा और इसको लिखूँगा और इन तीन टर्म को जो रिमेनिंग थ्री टर्म्स हैं उसको कंबाइन करके साइक्लिक सम के तौर पे लिख देंगे. सो ये क्या होगा, इसका जगह ज़्यादा चाहिए आपको. सो I have to rub off, okay, this part. Okay. So first term लिखिए पहले. So first term लेफ्ट हैंड भी याद रखिए क्या है, साइक्लिक सम ऑफ t of txy z. ये लेफ्ट हैंड साइड है. सो dx tyz will be what? It will be dx dyz then will be minus dx dzy, okay, and then once again minus dx Lie bracket yz. This is the first term. Now come over here. So plus dy tzx है. So this will be dzx minus dy dxz minus dy Lie bracket zx. Okay, ये भी हो गया. Come to the third one. So plus dz, then you have txy, so dxy minus dz dyx minus dz and Lie bracket xy. Okay, and these three terms 1, 2 and 3
I will write down as cyclic sum of dxt yz. ओके, और आप उसको भी चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, द लास्ट टर्म दिस फेलो. So I can write down the last three terms also. So minus क्या है, cyclic sum है, so ये हो जाएगा t आ रहा है ना, t तो ख़त्म हो गया. ओके, हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा txy. तो txy का मतलब हुआ dxy माइनस डी वाई एक्स प्लस हो जाएगा डी वाई एक्स, नहीं ली ब्रैकेट है, सॉरी वो ली ब्रैकेट है, तो वो ली ब्रैकेट है. सो ये होगा डी ऑफ, सो माइनस डी ऑफ ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड. ठीक है ना, और फिर प्लस हो जाएगा डी वाई डी जेड ली ब्रैकेट एक्स वाई, फिर प्लस हो जाएगा ली ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई जेड. ठीक है, और 3 टर्म और आएंगे, 6 टर्म. सो माइनस, अब क्या करेंगे हम, डी x की जगह y की जगह z की जगह x, प्लस डी z की जगह x की जगह y की जगह z, और प्लस अगेन माइनस डी z x प्लस y x. ठीक है, और इसको भी आप 3 टर्म यहाँ भी लिख दीजिए. Yes. ये तो ख़त्म हो गए because of the Jacobi identity equal to these 3 terms. The sum of these 3 terms is 0 because of the Jacobi identity. Now you are left with this. अब आप ज़रा सा कंबाइनिंग करना शुरू कर दीजिए. अच्छा, एक टर्म रह गया, कोई रहा तो नहीं? आ गया, यस, ओके, ठीक है, एवरीथिंग हैज़. अब आई कैन रिमूव एवरीथिंग, कुछ, यस, आई थिंक आई कैन रिमूव एवरीथिंग. All right, now look at this. I will look at this term dx dyz minus dy dx है कहीं, dy dxz minus d of ली ब्रैकेट xy कहीं है, होगा ये 3 अंडरलाइन टर्म है. इट विल गिव यू rxyz. Am I right? dx dyz minus dy dxz minus d of ली ब्रैकेट xyz is ली ब्रैकेट rxy. Same thing you can do over here, dxz dzx and ली of ली ब्रैकेट ये दिस वन, ना ये ली ब्रैकेट कौन सी चाहिए, zxy zx ये zxy है, dz dx r, हाँ, तो ली, तो zx की ली ब्रैकेट चाहिए, ये चाहिए, तो ये हो गया r ऑफ zxy प्लस r ऑफ, और आप देखेंगे एक और मिल जाए, प्लस r ऑफ zxy हो गया, xyz हो गया, yzx. ठीक है, ओके, ऑलराइट. अब आप देखेंगे, अब आपके इस टाइप के भी टर्म में dzxy और dzxy ये कट जाएंगे, जहाँ ऊपर ली ब्रैकेट आ रहा होगा वो कट जाएंगे. ठीक है,
एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस ये भी आपस में कट जाएंगे। डी वाई जेड एक्स ये है और एक कहीं और भी आ रहा होगा। हाँ ये ठीक है। नाउ व्हाट वी गेट, सो अब बाकी टर्म लिख लीजिए। एक तो ये बचा आपके पास माइनस साइक्लिक सम ऑफ डी एक्स टी वाई जेड, और कुछ बचा? नो, nothing else. So what do you get? You get the left hand side is cyclic sum of txyz is equal to cyclic sum of rxyz minus cyclic sum of dxt इसी को आपको इस तरह से लिखना है, और आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन साइक्लिक सम ऑफ आर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू साइक्लिक सम ऑफ टी एक्स वाई जेड प्लस साइक्लिक सम ऑफ डी एक्स टी वाई जेड. So this proves the Bianchi's first identity. और जो ये चीज़ रिवील कर रही है वो बड़ी स्ट्रेंज लुकिंग है. कर्वेचर और टॉर्शन जो आपस में रिलेटेड नज़र नहीं आते हैं अपेरेंटली, दे आर इन फैक्ट रिलेटेड टू ईच अदर. ऑलराइट, एंड इट्स क्वाइट अ यूजफुल formula. Now as a special case, if you have a manifold where the torsion is 0, means when your connection is symmetric, this term will become 0 because T appears over here, and since the torsion is 0, its derivative will be 0, this will also become 0, and you will be getting the cyclic sum of the curvature is 0. So as a special case, in particular, if the connection is symmetric, the Bianchi identity gives Bianchi's first identity becomes cyclic sum of R of x, y, z equal to 0. That is a speciality, and we make use of this identity on a Riemannian manifold. On a Riemannian manifold, torsion is identically 0. All right. Now we can talk about the Bianchi's second identity now. All right. So let us look at the Bianchi's second identity. What it is. Okay. Now this is simpler looking identity. So Bianchi's second identity. It says that the cyclic sum of covariant derivative of R xy total plus the cyclic sum of R of txyz is 0. So this is what is the Bianchi's second identity. So once again we will start from this term, second term. So consider, so once again
for the proof, so consider cyclic, पहले first of all R of T of x, y, z. Now this will be equal to R of, once again write down the value of Txy, it is dxy minus dyx minus leave bracket xy and per z. Now this I can write down, since R is a tensor, so R of dxy z, I will put a plus sign and will interchange z and dyx, so R of z dyx and then minus R of leave bracket xy z. बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन है जो पिछली बार हमने अडॉप्ट किया था। टी के फार्मूले से सारे टर्म लिख दिए, उसके बाद आर का टेंसोरियल कैरेक्टर कहता है कि ये सब जगह एडिटिव है, तो वो भी अप्लाई कर दिया, इसकी सिमेट्री भी है तो वो चीज़ भी अप्लाई कर दी। नाउ लुक एट द साइक्लिक सम। दिस इम्प्लाइज दैट द साइक्लिक सम ऑफ आर ऑफ टी एक्स वाई, cyclic sum में क्या होगा, I have to combine these, I have to write down these three terms cyclically, so this will be equal to, पहला term हो जाएगा R of dxyz plus R of z dyx minus R of leave bracket xyz, okay, plus R of y z x plus R x z y minus R zx, plus one more term plus R of plus R of minus R the bracket of ऑलराइट। बिल्कुल वही लाइन पे चल रहे हैं और फिर सिमिलर टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए। डी एक्स वाई वाला टर्म कहीं और दिख रहा है, डी एक्स वाई डी वाई एक्स, डी एक्स वाई चाहिए और एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और कहीं नहीं आया। अच्छा हाँ ये तो ये दोनों टर्म एक साथ लिखेंगे और ओके ऑलराइट, तो इन दोनों टर्म को एक साथ लिख ली। तो मैं बार बार क्यों लिखूं, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा और फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करूंगा, फार्मूला नंबर 2, तो आर ऑफ डी एक्स वाई जेड, आर ऑफ डी एक्स वाई जेड माइनस आर ऑफ वाई डेल एक्स, तो ये दोनों माइनस के हैं तो मैं उनको लेफ्ट में ले जाता हूँ, प्लस वाई डी एक्स जेड आर के साथ इज इक्वल टू हाउ मच, this minus this. So I will write it like this. So this will be equal to delta x r y z minus, ठीक है ना, माइनस व्हाट, डेल्टा x, नो d लिख रहे हैं तो d लिखते रहिए, माइनस डी एक्स आर ठीक है ना, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट टू, ये दोनों टर्म मिलके। इसी तरह से आप y वाले इन दोनों टर्मों को भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को लिखेंगे तो वो क्या आएगा आपको, आपको अब x की जगह y हो जाएगा, y की जगह z हो जाएगा और z की जगह x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस
dy r zx, ओके। एंड देन अब आप z वाले देखेंगे तो z के दो टर्म ये और ये हैं, तो थर्ड टर्म आई विल राइट डाउन ओवर हेयर प्लस dz r of dz comma leave bracket r of x y, ठीक है ना, माइनस dz r x y। Okay, now we can further simplify it. I can rub off this. ठीक है, ये हो गया, ये हो। All right. Look, इसको मेंटेन करना है। ये तीन टर्म को तो मैं लिख लूँगा एज साइक्लिक सम। So the left hand side is okay. What was I have started with cyclic sum of r of t x y z, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट साइड में हमारे पास क्या आ गया, इनको मैं तीनों को एक साथ लिख रहा हूँ एज साइक्लिक सम। क्या है ये, dx r y z, माइनस के साथ है ये, ठीक है, ठीक है। अब बाकी टर्मों को हम देख लेते हैं। अब बाकी टर्म हमारे पास जो बचे वो क्रॉस कर रहा हूँ मैं, ये हैं और ये है। अब ली ब्रैकेट आप खोल दीजिए। सो प्लस dx ऑफ r y z माइनस r of yz dx, ओके। ये ली ब्रैकेट खुल गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये ली ब्रैकेट खोल दीजिए। सो प्लस dy ऑफ rzx माइनस rzx dy, and this one is dzr plus dzr xy minus rxy dz। सब टर्म हो गए, ओके ओके। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइक्लिक सम ऑफ डी, इसको चाहूँ तो मैं dz r xy भी लिख सकता हूँ। साइक्लिक सम तो सेम ही है, मगर आपको एज यू विश। dx r y z, this is our first term minus times, and now I will come over here one by one। अब टर्म ज़रा ज़्यादा आएंगे, तो प्लस dx r का recall the formula for r, so it is dy dz minus dx, then you have dz dy minus once again d of what, d of what, ली ब्रैकेट क्या होता है, आर एक्स वाई जेड क्या होता है, आर एक्स वाई जेड हमारा होता है डी एक्स डी वाई जेड माइनस डी वाई डी एक्स जेड माइनस डी ऑफ ली ब्रैकेट एक्स वाई जेड। ये अब जेड नहीं आ रहा है तो ली ब्रैकेट ऑफ, कहाँ पे थे हम, ये वाला ली ब्रैकेट ऑफ वाई जेड। डी एक्स तो पहले चल ही रहा है ना, डी एक्स तो साथ में चल ही रहा है, ली ब्रैकेट ऑफ वाई जेड। देखिए ली ब्रैकेट, ये डी एक्स तो सबके साथ लगा है ना, डी एक्स डी एक्स डी एक्स। अब आप कहाँ जाएंगे, अब इसको भी लिख लीजिए, माइनस इसको मिटा देते हैं, माइनस वी आर हेयर,
सो ये हो गया माइनस डी वाई डी जेड डी एक्स। ओके, साइन के लिए केयरफुल रहिएगा। देन माइनस माइनस प्लस, तो डी जेड डी वाई डी एक्स। ओके, देन नेक्स्ट इज नेगेटिव टर्म, वो फिर प्लस हो जाएगा, प्लस डी ऑफ ली ब्रैकेट वाई जेड एंड देन डी एक्स। हो गए सब? तो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ आइए, सो प्लस डी वाई डी जेड एक्स डी जेड डी एक्स, देन माइनस डी वाई डी एक्स डी जेड माइनस डी वाई डी वाई देन डी ली ब्रैकेट व्हाट जेड एक्स। ये भी हो गया। अब नाउ कम ओवर here, so then once again minus dz dx dz dx dy, then plus dx dz dy and dy, then once again plus d of ली ब्रैकेट zx dy। ओके, ये भी हो गया। देन कम ओवर हेयर, प्लस dz dx dy। ओके, देन माइनस dz dy dx, अगेन माइनस dz dz d of ली ब्रैकेट xy। इज इट ओके? ये भी हो गया। देन लास्ट वन इज माइनस dx dy dz। ओके, देन प्लस dy dx dz। ठीक है, देन प्लस d ऑफ ली ब्रैकेट xy एंड dz। ये भी हो गया। we have written all terms carefully, so अब मैं ये रिमूव कर सकता हूँ एंड सी कौन कौन से टर्म कहाँ कहाँ कैंसिल हो रहे हैं। डी एक्स डी वाई जेड, सो एक्स वाई जेड कहीं दिख रहा है अपोजिट साइन के साथ? यस दिख रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। एक्स जेड वाई कहीं दिख रहा है? एक्स जेड वाई कहाँ? नीचे। ये एक्स जेड वाई पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आप देखिए एक्स और ली ब्रैकेट वाई जेड कहीं है? एक्स और ली ब्रैकेट वाई जेड, सही है। कॉम्बिनेशन में क्या है? कहाँ? ये सही है सर, ऊपर पहले डिवाइड है सर dx ना, वो नहीं, वो भी तो छोड़िए, अभी रुक जाइए। अब वाई जेड एक्स देख, वाई जेड एक्स कहीं है? ये ऊपर ही सर, ये है थर्ड, ये वाई जेड एक्स, ये तो दोनों वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स और अच्छा जेड वाई एक्स, नीचे ये सर जेड वाई उसी के नीचे सर ये जेड वाई एक्स पॉजिटिव जेड वाई एक्स नेगेटिव, सो इसको ऐसे काट दीजिए। अच्छा वाई एक्स जेड कहीं है? इसके नीचे आ रहा है तो हाँ ये भी है वाई एक्स जेड। चलिए अच्छा, वो zxy है और जेड एक्स वाई ये है और जेड एक्स वाई ये है, तीन कट गए। अब आपके पास जो टर्म बचे उनको आप देख लीजिए क्या है मामला। ओके ऑलराइट, सो
मैं लिख लेता हूँ पहले इस पूरी लाइन में। एक तो ये है, ये तो चल ही रहा है, माइनस इक्वल टू माइनस साइक्लिक सम ऑफ डी एक्स आर वाई जेड। उसके बाद है माइनस डी एक्स डी ली ब्रैकेट वाई जेड। ये हो गया। आगे चलें, अब ये है प्लस डी ऑफ ली ब्रैकेट वाई जेड और डी एक्स, माइनस डी वाई डी जेड एक्स। हाँ फिर ये आ गया माइनस डी वाई डी ऑफ ली ब्रैकेट जेड एक्स, प्लस डी ऑफ जेड एक्स वाई। कहाँ है ये, प्लस डी ऑफ ली ब्रैकेट जेड एक्स डी वाई। ये भी हो गया। माइनस डी जेड डी ऑफ ली ब्रैकेट एक्स वाई प्लस ठीक है ना। अच्छा सा ओके ओके, इसका क्या कर सकते हैं, ये सब कैंसिल आउट हो जाने चाहिए थे, तो कैसे रह गए, ये माइनस साइन डी एक्स वाई और डी जेड, और अच्छा सा द टॉर ये हो जाएगा एक्स ली ब्रैकेट वाई जेड। हाँ ये सब अगर ये सिमेट्रिक हो जाएं तो ये कैंसिल हो सकता है, यानी कि ऐसा मामला है कि डी एक्स डी वाई माइनस डी वाई डी एक्स they are not symmetric in general. In fact, it is equal to d of ली ब्रैकेट, हाँ d of ली ब्रैकेट हो जाएगा, मगर r का टर्म भी आ जाएगा। r का टर्म हमने राइट साइड में लेके चले हैं। what has happened, I don't know. हाँ पॉज कर दीजिएगा। So, in fact, in my calculation, I had left out these three terms. So, we have to get hold of these terms also, so that 1, 2, 3, 4, 5, 6 term could be cancelled out. So, let me recall. So, this is equal to minus cyclic sum of this thing, and plus over here what we had done, we had written it down as delta x comma r y z, okay, ली ब्रैकेट, and minus the dx, not delta, dx r y z, okay, plus this term minus these terms I have to rewrite. So, in fact, I will put a bracket and let me write down these terms. So, this will be d ली ब्रैकेट x y z x y dz and minus dz d of ली ब्रैकेट x y and minus d of ली ब्रैकेट x y the ली ब्रैकेट z. In fact, I must write down this as cyclic sum. So, if I remove, what to remove? There is very little space to write. I can rub off this part. And then you have plus, no, minus is already common, so I will write down plus, for this you have d of yz
dx, okay? Yes. Then minus dx d of leave bracket yz, and then minus d of leave bracket yz x, and then once again this term minus, since you have taken common, so plus d leave bracket xy dz, and then minus XY is a ZX. ये xy है ना? This term we are writing this R. Now we are writing this. ओके ओके ओके, हाँ ये तो ऊपर का है, सॉरी डी ऑफ लीव ब्रैकेट zx zx dx, no sorry dy, okay, then minus dy d of leave bracket zx minus d of leave bracket zx then y, ओके। जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। अब आप देखें कि कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं। डी एक्स ली ब्रैकेट डी वाई जेड, डी एक्स डी वाई जेड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देन यू हैव ली ब्रैकेट वाई जेड एक्स, ली ब्रैकेट वाई जेड एक्स, ये प्लस ये माइनस, ओके। और वाई ली ब्रैकेट जेड एक्स, वाई ली ब्रैकेट जेड एक्स, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर जेड एक्स ली ब्रैकेट और वाई अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, जेड ली ब्रैकेट एक्स वाई, जेड ली ब्रैकेट एक्स वाई and ली bracket xy, then z, ली bracket xy and z, first one. Yes. So these three terms will also vanish. What remain is these. So plus d of, you add all these things, ली bracket xy z plus yzx plus zxy. Since the sum of these three will be 0, so this is also equal to 0. So the right side become 0. Only one term is there in the right hand side. So we reach to the conclusion that the cyclic sum of R of Txyz plus cyclic sum of dxr yz is equal to 0. This I have taken into the left hand side, and this gives me the Bianchi's second identity. Once again, as a particular case, if the torsion of the connection is 0, then this term will go off, and this would imply, so if the torsion is 0, if the torsion is 0, or equivalently the connection is symmetric, then the identity, second identity of course, reduces to this term will go off, and you will be getting the sum of the derivatives of R is 0. Cyclic sum of the derivative of R yz is identically 0.
So, these are the two famous identities of Bianchi which relate the torsion and the curvature, and this finishes up the course, and I stop at this point.